to look here. Okay, it is given that the point P with the coordinates 1, 4 and point R with the coordinates 0, 9 are the 2 points. What we have to find, the three things. The very first thing is the shortest distance between the 2 points. Second thing, the midpoint of the 2 points. And the third thing is form the equation. We have to form the equation of the line joining these 2 points and joining the points P and R. So, solving part 1. You people have written, देखो, I told you this question belongs to P1. Okay? So we have to solve like this. And our answer will end here. So the question, the answer is the distance between P and R is 26 units. Under 26 units. Is it okay? Next was midpoint. Up देखो, I'm giving you a chance, only 1 minute, okay? If you people have solved it, please let me know in the comments. The answers of part 2 and part 3 together in same message. Amna, thank you. Vansh, got your answer. Karthik got your answer. So, Michelle, Shabash, Evach, Shabash. Umar, Shabash. जो बताना चाहते हैं प्लीज जल्दी जल्दी बताइए. I have to move forward. Salim bhai, I got your answer. Afra Bakhtabar, शाबाश. अच्छा, पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों का एक साथ बता दीजिएगा प्लीज. नवेश, तू तो एब्सेंट था ना, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व करके बता दिया? इट मींस कॉपी करके बता रहा है. Avich, very good. Afra, shabash. Jessica, got your answer. Navish, very good. Anyone else interested in answering the questions? So please do it quickly. Bakhtawa, shabash. Sufyan, very good. Avich, shabash. Amarlal, got your answer. Okay, now moving. Look, second part is we have to find the midpoint, and the third part is we have to form the equation. So far, I've received correct answers. Look, this is the answer for the midpoint. The formula we have applied here: x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. The x coordinates of points P and R were 0 and 1. So we add them, divided by 2. X coordinate again 1 upon 2, comma. The y coordinates of both the points were 4 and 9. So we added them. 4 plus 9 is 13, 13 upon 2. So writing the answer like this is acceptable. If you people are writing the answer like 0.5, 6.5, this is also acceptable. But keeping the values in fraction is much better. Part C states or asks us to find to form the equation. Okay, so we have to follow the steps. This is step number 1, in which we have to find the slope. So after putting the values, we came to know that the slope of this line is -5. This is step number 2. Okay. In step number 2, we have to find the value of y-intercept. So, and in
instead of this y and x, we can use any of the points. Acha, here I have used the coordinates of point r, 0, 9. So the coordinates are, sorry, the y-intercept is c. Now step number 3, y equals to mx plus c. We just have to put the values of m and c. So y equals to m is -5 and c is 9. This can be also written as 5x plus y equals to 9. One and the same thing. Okay, so either way the answer is correct because there isn't any difference between them. We can write it in this way or in this way. Chalo, next. Today's lecture. Okay, someone is waiting at the lobby. Let me see who's there. Oh, Yogesh, Suja, Sanaullah, Salim, Salim Bhai, Omar, and Amna. Shabash. Okay, now starting today's lecture. Please, everyone, this is very much important. This is very much important. Uh, I hope Damini is here. Is Damini here? Okay, she's not here then. Well, thank you, Raj. Okay, everyone. Actually, I was asking for Damini because she asked me to explain this again. Actually, I have never explained this. So, सिर्फ और सिर्फ ये नूरे हिरा एवज फसीहा इनको बताया हुआ है बहरहाल moving forward in coordinate geometry we are having so many straight lines. If we talk about two lines, so two lines can be parallel to each other or can be perpendicular to each other. वैसे और भी cos कुछ हो सकता है, but we are considering only these two because there is a special relationship between the slopes of such lines. So we are going to study or we are going to learn and try to understand these two relationships one by one. So सबसे पहले parallel lines. This is a sort of flowchart that I have drawn for you people. Now read it out. I'm also reading it. The very first line is saying that if two lines are parallel, so after that I have written the characteristic or the facts about the parallel lines. We can say it as facts or हकीकतें बताई गई हैं. So look here. If two lines are parallel to each other, the parallel lines are same in direction. I hope everyone is agreed. Next, if the two lines are parallel, the parallel lines are rising or falling at the same angle with the horizon. This is the very first point that I am going to explain with the help of diagram or with the help of graph. Okay, next. This point and this point is actually one and the same thing. I have explained this point over here. So that is saying that the parallel lines have the same rate of rise and run. सेम राइज या सेम रनिंग नहीं होनी चाहिए, उनका वेट सेम होना चाहिए. So what does it mean? Weight means ratio. Ratio means something upon something, and something upon something means the ratio is rise upon run.
यानी अगर हम दो पैरेलल लाइंस का राइज और रन का रेशियो निकालेंगे, सो दोनों लाइंस का सॉल्व होने के बाद रेशियो का आंसर सेम आना चाहिए. सो इट इज सेइंग दैट द पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप्स. जब सेम स्लोप हो गए तो आखिर में हमने क्या कंक्लूजन लिखा? The slopes or the gradients of parallel lines are always equal to each other. Are always equal to each other. Are always equal to each other. This is the thing that I am going to verify, justify, explain you people with the help of diagram or graphs. So very first point I will be explaining is this point. What does it say? This point says कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो सेम एंगल बनाएंगे. What is horizontal? Horizontal is an imaginary line in the direction of x-axis. Horizontal is an imaginary line in the direction of x-axis. Okay, one more thing. If anyone is unable to understand anything, please turn on your mic, tell me your name, and then ask the question. So, till here, is anyone having any of the problem? So, please let me know. Okay, thank you. Moving towards the next slide. Okay, these are the two parallel lines. These are the two parallel lines. I know this is not drawn to the scale, but apparently they look like, appear to be. So we are considering the two lines. I have mentioned this line as line 1 and this line as line 2. एक लाइन को लाइन 1 नाम दे दिया, दूसरी लाइन को लाइन 2 नाम दे दिया. ठीक है, तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा उसको हमने नाम दिया m1 और लाइन 2 का जो स्लोप होगा उसको हमने नाम दे दिया m2. फाइन. अच्छा, पहला पॉइंट मैं क्या बताने जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट इफ दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बनाएगा ना, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए. वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए. लेट्स चेक. अच्छा, once again भाई, because the diagrams are not to the scale, so I have just imagined it approximately. This is horizontal, this is horizontal. ठीक है, this is the angle make, which it is making with line 1 and this is the angle which it is making with line 2. So दोनों का मतलब दोनों में 66. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली 66 है. मतलब समझाने का ये है कि because they are parallel to each other, so it is very much obvious कि हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों का जो एंगल होगा वो जो भी होगा सेम होगा. If this is 66, ये भी 66 ही होगा. If this is 72, ये भी 72 ही होगा. And if this is 69, तो ये भी 69 ही होगा. ठीक है जी बात. Moving towards the next point. हमारा next point क्या था? Let's check. We have covered this. The next point is rise or run का ratio, है ना? So now I am going to explain this. कि rise और run का ratio same क्यों होता है, कैसे होता है? Let's check. Once again, two of the parallel lines. This is line 1, this is line 2. The slope of line 1 is represented with the help of m1 and the slope of line 2 is represented with the help of m2. Further, अब देखो बेटा, ये लाइन कोई ना कोई ट्रायंगल बनाएगी इन अ सेंस कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको कुछ ना कुछ ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इस तरफ, यानी कुछ ना कुछ एक्सिस पे ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे
ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी. दिस ट्रेवलिंग इज एक्चुअली नोन एज राइजिंग एंड रनिंग. If it is traveling along the y-axis, this is known as rising, and if it is traveling along the x-axis, it is known as running. Okay, so it is very much clear in the next slide that both the lines are having rise and run. Look, line 1 का राइज यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसकी रनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है. Obviously, a slope is having a sloped line. एक ऐसी लाइन जिसका कोई ना कोई स्लोप है, उसमें कुछ ना कुछ राइजिंग भी की होगी, कुछ ना कुछ रनिंग भी की होगी. सेम इज द केस विथ लाइन 2. ठीक है, इसका राइज, इसका रन. अब इसको प्रूव करने के लिए वी आर अज्यूमिंग कि लाइन 1 ने जो राइजिंग की है वो की है 9 यूनिट्स और रनिंग जो की है वो की है 6 यूनिट्स. लाइन 2 ने जो राइजिंग की है वो है 3 यूनिट्स. लाइन 2 ने जो रनिंग की है वो है 2 यूनिट्स. रिमेंबर, लाइन 1 का 9 एंड 6 यूनिट्स है, लाइन 2 का 3 एंड 2 यूनिट्स है. अच्छा, क्योंकि हम भूल ना जाए, हम इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं. हमें साबित करना है कि क्या m1 इक्वल आता है m2 के, and we all know that m is actually what, a ratio which is rise upon run. स्लोप का फॉर्मूला बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए इट इज rise upon run. सो वी हैव टू प्रूव कि जो आंसर लाइन 1 के स्लोप का आता है वही आंसर लाइन 2 के स्लोप का आता है या नहीं. सबसे पहले लाइन 1. ओके, लाइन 1 का राइज क्या था, 9 यूनिट्स. रनिंग कितनी थी, 6 units. Okay, applied the formula. Rise upon 1 में लिखा 9 upon 6. इसको सॉल्व किया, दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल हैं, 3 3 times and 3 2 times. So we came to know m1 is 3 upon 2. Keeping it simple, हमने इनको फ्रैक्शन में ही रखा है. We can also write 1.5, पर उसकी अभी नीड नहीं है. ओके, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 3/2. लाइन 1 का ग्रेडियंट आया है 3/2. लेट्स चेक फॉर लाइन 2. लाइन 2 का राइज था 3 और रनिंग थी 2. सो इसके ऊपर राइज अपॉन 1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, लाइन 2 का भी ग्रेडियंट हमें पता चल गया. सो m2 इज 3/2 वंस अगेन. यहाँ पे हमें ये देखो, ये पता चल गया ना दैट बोथ द लाइंस आर हैविंग सेम ग्रेडियंट्स. लेट्स चेक. देखो, this portion represents the solution of line 1's slope. ये m2 के लिए. तो क्या ये दोनों आपको सेम नजर आए? बिकॉज ये दोनों सेम हैं तो हमने एक चीज कंक्लूड कर दी कि m1 इक्वल m2 के होता है, लेकिन ओनली when the lines are parallel. When the lines are parallel to each other, their slopes are always equal. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया. The slopes of gradients of parallel lines are always equal to each other. We have now verified it with the help of examples and diagrams. If anyone is having any confusion, please let me know. Okay, thank you. Now, what about the two perpendicular lines? If the two lines are perpendicular, तो according to the, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ points लिखे हैं. Okay, reading it one by one. The perpendicular lines make an angle of 90 degree at the point of their intersection. If they are 90, they are perpendicular, they must form a 90 degree at the point of intersection. Very first point, everyone is agreed with it. Second point, the product of the slope or gradients of two perpendicular lines is always -1. यानी क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा, m1 इक्वल होता है m2 के.
और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए व्हाट वी आर स्टडीइंग, we are given with this relationship कि whenever two lines are perpendicular तो उनका जो स्लोप्स होंगे ना, उन दोनों को आपस में जब कभी भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, -1। प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, -1। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या लिखी है मैंने, वी कैन रीअरेंज दिस relationship to find any one of the slopes given that the other slope must be known। Obviously इसका मतलब ये है कि m1 और m2 दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मुझे पता है, दूसरी वाली का मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल m1 मालूम करना है, m2 पता है, तो वी कैन रीअरेंज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। और सेम इज द केस विद m2, अगर m2 चाहिए तो m1 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, m1 चाहिए तो m2 वहां जाके डिवाइड होगा, m2 चाहिए तो m1 वहां जाके डिवाइड होगा। इज इट फाइन? अब सर ये तो आपने बता दिया, वंस अगेन हम कैसे मान लें? सो आई एम गोइंग टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहले तो डायग्राम बताता हूँ, प्लीज पे योर कंप्लीट अटेंशन। These are the two lines, two perpendicular lines। लाइन 1 उसके स्लोप को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया m1 से, लाइन 2 उसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर दिया m2 से। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग इट्स कलर। लाइन 1 को व्हाइट रहने देते हैं, लाइन 2 को ग्रीन कर देते हैं। ओके, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज़ दिखानी है कि दोनों के स्लोप्स को कैलकुलेट करते हैं, दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखेंगे आंसर -1 आता है या नहीं। सो वी आर स्टार्टिंग बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स की बात क्यों की गई, राइज वन से मदद की जा सकती थी ना। अच्छा, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ एनी लाइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस का सवाल है ना, सो इट वाज वेरी मच नेसेसरी कि हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म्स यानी जैसा पेपर्स में आता है वैसा देखा जाए। सो हमने सपोज किया द पॉइंट्स in white color, the coordinated points in white color represents the coordinate points on line 1 और green वाले line 2 के हैं। So making the data, line 1 के coordinates हैं 10, 30 and 20, 10। लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 30 एंड 20, 10। लाइन 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 15, 10 एंड 45, 25। हमने इनको नोट कर लिया। सर आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्लोप y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, जिसके यहाँ से निकलेगा मेरा m1 और लाइन 2 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो m2 का आंसर पता चलेगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये लाइन 1 के भी मौजूद हैं, लाइन 2 के भी मौजूद हैं। सो फॉलोइंग द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 अप्लाइंग द फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ ये देख लो बेटा 10, 30 है ना, सही कर दो 10, 30, ये है x, ये है y। if this is the first point, मैंने हमने इसको x1 y1 कंसीडर कर दिया, तो ये x2 y2 हो गया ना, तो y2 minus y1 10 minus 30, 10 minus 30, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट किया और हमें पता चल गया the slope of line 1 is -2। ये हमें याद रखना है। m1 का स्लोप क्या आया है, -2 आया है। m1 का स्लोप क्या आया है, -2 आया है। दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनमें से एक परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आया है वो आ गया है -2। ओके, सेकंड लाइन 2, हमने वही चीज लाइन 2 के लिए भी की कैलकुलेशंस, और मुझे पता चला कि 15/30 तो होता है 1/2। सो 1/2 को हमने लिख दिया 0.5, तो मुझे पता चला
the value of M2 is 0.5. M1 का आंसर आया था -2, M2 का आंसर आया है 0.5. लेट्स चेक. ये देखो समरी एक साथ लिख दी मैंने. लाइन 1 की कैलकुलेशंस, लाइन 2 की कैलकुलेशंस. लाइन 1 का जो स्लोप आया है वो आया है -2. लाइन 2 का जो स्लोप आया है वो आया है 0.5. Now what we have to show? We have to show that whether इन दोनों के प्रोडक्ट का आंसर -1 आता है या नहीं. अगर आया तो हमें वो चीज साबित कर दी गई कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 आता है. सो लेट्स चेक. वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है. सो m1 की जगह वी हैव टू राइट -2, m2 की जगह वी हैव टू राइट 0.5. जब हमने इसको सॉल्व किया, -2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से. लेट्स चेक. -2 multiply by 0.5 means 1/2. 2 से 2 cancel. 1 -1 times is -1. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आ गए बराबर. Both are equal to each other. That's why we have verified this relationship. So relationship क्या कहती है? Look, जब हमने इसको सॉल्व किया हमें क्या पता चला, M1 और M2 जब कभी भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा. लेकिन दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस. दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस. दिस इज ओनली फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक होगी जी बात. दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. मतलब एक्सप्लेनेशन के अंदर इट वाज द एंड. अब मुझे ये बताइए, किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड डू लेट मी नो. ओके, जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जल्दी से देखिए. ऑल क्लियर, थैंक यू. सनाउल्लाह साहब ने रिस्पॉन्स दिया. उसके अलावा मुझे ऐसा लगा सब सो गए. है ना अफरा, सब सो गए ना? तो अफरा भी बोल रही है यस. बहरहाल, वो हफ्सा ने रिस्पॉन्स दिया. हफ्सा की हाल है? ओके सून, थैंक यू. When everything is clear, now I am going to show you one of the videos. Actually, सब सब कुछ वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है. Everything is the same, but I just want to tell you that how you have to do this. Very quickly, these are the two parallel lines. ठीक है, एक लाइन के स्लोप को इसने भी m1 दे दिया और दूसरी लाइन के स्लोप को m2 दे दिया. Because these two lines are parallel, so it is given that the slopes of both of the lines are always equal. So m1 equals to m2. This was all about the parallel lines. ठीक है, अब perpendicular lines. When the two lines are perpendicular in this way, they are making 90 degree. एक का इसने दे दिया m3 और m4 दे दिया. Okay, no issue. Because they both are perpendicular, so it is given by कि इन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1, जैसा कि आपको बताया गया. और फिर मैंने बोला था इसको रीअरेंज किया जा सकता है. तो देखो m3 फाइंड करना है तो m4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, m4 फाइंड करना है तो m3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ
solve this. बल्कि जल्दी से पिक्चर ले लो. Actually, this time is for the load shedding here. So take the picture of this question right now. We are having the 2 points, A and B. Equation, we have to find the equation of the perpendicular bisector of AB. AB की equation नहीं चाहिए, AB के perpendicular bisector की equation चाहिए. AB की equation नहीं चाहिए, AB के perpendicular bisector की equation चाहिए. So जल्दी से बेटा इसको capture करो, and then I will let you know tomorrow the answer of this. Now, um, I am leaving the class.